ये रिकॉर्डिंग। तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नाउ ऑन हीटिंग एन ऑब्जेक्ट, यूजुअली ऑन हीटिंग ऑब्जेक्ट expand. next one, the temperature range of the clinical thermometer 35 32 to minus 35 to 42 degrees Celsius. Celsius we have discussed on the last class। 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट वन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज दी 98.6 degree Fahrenheit. 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कल हम लोगों ने परसों हम लोगों ने मेजर भी किया था, याद आ गया। नेक्स्ट Yes, वन, sir. द डिफरेंस बिटवीन द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मनी? 100 parts. 100 सेल्सियस 100 parts. सेल्सियस। और अगर केल्विन की बात करें तो 100 180 तो 180. 180 इन फ़ारेनहाइट 180। नेक्स्ट, हीट एनर्जी इज केपेबल ऑफ डूइंग Work. वर्क। हीट एनर्जी इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क। हॉट एंड कोल्ड आर Relative. टर्म। एक्चुअली यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों? रेस्पेक्टिव टर्म। बच्चों कोई भी हॉट है या कोल्ड है, किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं कि एब्सोल्युटली हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते तुम गर्म हो। अरे गर्म किसके रेस्पेक्ट में है? गर्म रेड हॉट आयरन के या हमारे रेस्पेक्ट में गर्म है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? रेस्पेक्टिव टर्म्स। हॉट एंड कोल्ड आर दी रेस्पेक्टिव टर्म्स। नेक्स्ट वन, स्टीम इंजन कन्वर्ट यस हीट एनर्जी Heat. टू Mechanical energy. energy. Very good. Heat energy into mechanical energy. Heat energy into, यहाँ लिख देता हूँ, it converts heat energy into chemical energy. Sorry, mechanical energy. The mechanical. Yes, mechanical work होता है तो mechanical energy. Heat energy into mechanical energy. Mercury and glycerin are two commonly used liquid in the thermometer. Mercury use करते हैं। Ball. Yes, alcohol use करते हैं। Mercury and alcohol। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? False। False. Next one, all solid metals expand equally. No, all False. differently, they expand differentially। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन, व्हेन हीट पासेस फ्रॉम अ hot to cold body, there is a change in mass। yes, Yes, sir. mass थोड़ा चेंज होता है बच्चों, लेकिन हमारे यहाँ पर डू यू एग्री? अब इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आप लोग केवल इतना ध्यान रखो, दी कोल्ड बॉडीज हैविंग हायर मास देन दी हॉट बॉडीज। जो हॉट बॉडी होती है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज विच हैविंग हायर टेम्परेचर हैविंग लेस एनर्जी। हाई एनर्जी, हायर टेम्परेचर, लेस मास, हल्के हो जाते हैं वो। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस नेक्स्ट वन, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना होता है? 98.6 degree Fahrenheit. 98.6 degree Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन, the phenomena of expansion of a substance on heating is known as Thermal Thermal expansion. expansion. this is known as Thermal expansion. expansion। Thermal expansion. Got it? Next question, Yes, sir. the degree of Yes, sir. or coldness processed by a Temperature. is known as, Temperature. this is the temperature
अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन आंसर भेज रहा हूं। इसका टेम्परेचर जो इतना एक्सपेंशन, इट क्रिएट अ ह्यूज प्रेशर ओवर द wall of the tire, ultimately tire gets burst. Next question, when two stones are rubbed on each other, it produces the spark. बच्चों, when Due to a friction. Because of friction. Because of friction. it causes friction, and due to friction it increase the temperature and causing sparking. अगर ज्यादा हमको और ज्यादा अगर आग लगानी हो, if we want to enlight or produce a light, produce the fire, then उनको हमें और ज्यादा vigorous way में उसको करना पड़ेगा. What is the advantages of the providing constriction in the clinical thermometer? Look here, clinical thermometer we have discussed on the last class date. In case of the clinical thermometer, there is a सर फिर मर्क्यूरी फटाफट से बहकर पीछे नहीं चला जाता. Yes sir. ये यहाँ और सर इससे डॉक्टर को हेल्प होती है. this one, and this is the bulb. This is thermometer. In this way, अब ये king this is thermal expansion, और ये मर्क्यूरी यहाँ तक पहुंच गया. अभी मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पर है. अब ये एकदम से यहाँ पर नहीं है. जैसे हमने बाहर निकाला, मर्क्यूरी का लेवल एकदम से डाउन होगा, लेकिन the king prevent the sudden fall of the level of mercury, so that doctor can read it easily, ताकि वो easily उसको रीड कर सके. जब ये खत्म हो जाता है, जब उसने रीड कर लिया तो उसको इट गिव अ जंप, ताकि ये मर्क्यूरी वापस अपनी जगह पर पहुंच जाए. नेक्स्ट वन, why is it possible, why is not possible to use mercury thermometer for the low temperature? बच्चों, as you know well, आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, the level of freezing point of mercury is minus 39 degree Celsius. minus 39 degree Celsius. Below this temperature, below the minus 39, we can't measure the temperature. सर क्योंकि सर जैसे इथेनॉल इसका -114 डिग्री सेल्सियस होता है. तो क्या यूज करेंगे फिर? इथाइल अल्कोहल. Why we use the ethyl alcohol? Because the freezing point of ethyl alcohol is about minus 114 degree Celsius. Next one, define temperature. The degree of hotness and coldness is called as temperature. And what is the SI unit? Kelvin. Next, Kelvin. On what factors the temperature of an object depends? बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन, एटम्स, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं, all the matter made up of small particles, all the matter made up of small particles. ये जो particles हैं, these particles vibrate, these particles having energy and they vibrate. अब बच्चों, ये जो particles हैं, ये particles जो vibrate हो रहे हैं, इनका वाइब्रेशन कब ज्यादा होगा? जब when they gain heat. When they gain heat, it increase the temperature and their kinetic energy. When they having higher energy, they vibrate much faster. अगर temperature कम है, तो they having less energy. If temperature higher, they having more energy to vibrate. और जब ये वाइब्रेट करते हैं, ड्यू टू दी वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा, तो ये अपनी प्लेस को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं. तो बच्चों, हमारे पास क्या हो गया? डिफाइन व्हाट फैक्टर्स ऑफ द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर, on factors does the
on what factor does temperature on an object depend? तो बच्चों डिपेंड किस पे करेगा? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स. Vibration of atoms. Yes. Next one, mention the advantages of using the mercury. तो mercury के यूजेज के यहाँ पर Sir, conductor of heat. हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नंबर वन, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल. बच्चों मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच अकर इन द लिक्विड स्टेट. मर्क्यूरी एक अकेला In room temperature. लिक्विड में. एक पॉइंट. नंबर टू, metals are good conductor of heat. So when they are good conductor of heat, they mercury get heat very easily and quick expansion, thermal expansion. Sir, attain the temperature So the quickly. thermal expansion readily. Third point, mercury is shining white in color. Due to it is shining white in color, so we can read it easily, observe it easily. हम लोग इसको easily observe कर सकते हैं. ठीक है, मर्क्यूरी को हम लोग easily observe कर लेंगे. Next one, mercury does not stick with the walls of the glass. मर्क्यूरी जो होता है, वॉल जो ग्लास की वॉल्स होती हैं उनसे चिपकता नहीं है. It does not cling or stick to the wall of the glass. So these are the reasons why we use the mercury. One another reason, lower temperature कितना बच्चों बॉइलिंग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? Minus 39. बॉइलिंग पॉइंट कितना बना इसका हमारा? यस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 357. तो देयर इज अ वेरियस लार्ज टेम्परेचर रेंज. On what factor does temperature on an object depend? तो बच्चों डिपेंड किस पे करेगा? वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स. Vibration of atoms. Yes. Next one, mention the advantages of using the mercury. तो mercury के यूजेज के यहाँ पर Sir, conductor of heat. हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नंबर वन, mercury is a liquid metal. बच्चों मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच अकर इन द लिक्विड स्टेट. मर्क्यूरी एक अकेला In room temperature. लिक्विड में. एक पॉइंट. नंबर टू, metals are good conductor of heat. So when they are good conductor of heat, they mercury get heat very easily and quick expansion, thermal expansion. Sir, attain the temperature So quickly. the thermal expansion readily. Third point, mercury is shining white in color. Due to it is shining white in color, so we can read it easily, observe it easily. हम लोग इसको easily observe कर सकते हैं. ठीक है, mercury को हम लोग easily observe कर लेंगे. Next one, mercury does not stick with the walls of the glass. mercury जो होता है, wall जो ग्लास की walls होती हैं उनसे चिपकता नहीं है. It does not cling or stick to the wall of the glass. So these are the reasons why we use the mercury. One another reason, lower temperature कितना बच्चों बॉइलिंग, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? Minus 39. बॉइलिंग पॉइंट कितना बना इसका हमारा? यस, इट्स बॉइलिंग पॉइंट अबाउट 357. तो देयर इज अ वेरियस लार्ज टेम्परेचर रेंज, जो उसको जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं. 357 है, तब तक तो हम लोग काफी रेंज हो गई. तो इट गिव्स अस अ बिग रेंज टू मेजर द टेम्परेचर. नाउ नेक्स्ट पोर्शन, mention some importance of the heating effects of the heat. So number one, change in shape, size of an object to perform various chemical reactions. Chemical reactions. Next one, heat is used to conduct various works through the we burn the fuel in our vehicles
to run the vehicles. Sir, volume. Next one, heat is also used to increase the temperature of an object. Heat also affect the living organisms. We do not survive at very low temperature and we can't survive also at very high temperature. हम लोग polar condition में जाकर जिंदा नहीं रह सकते. So the heat provides us the optimal condition to survive. Heat also causing changes in the volume of an object. Volume just thermal expansion. Next one, heat also causing change of the state, physical state, solid to liquid, liquid to gases. Got it? तो ये हमारे पास में यूजेज हो जाएंगे हमारे हीट के. नाउ differentiate between the thermal expansion of solid, liquid and gases. In case of solid, minimum expansion we can observe because particles are bind together. Particles are do not allowed to move from one place to another. In case of gases, maximum thermal expansion we can observe. In case of liquids, less than the solid, less than the liquids, gases, but more than the solid thermal expansion we can observe. Next, differentiate between the freezing point and absolute zero. It is very important point to you. Try to understand. ये पॉइंट हमारे लिए काम कर रहा है बच्चों. तो देखा जाए 0 डिग्री सेल्सियस. 0 degree Celsius is also known as 273 Kelvin. Freezing point of water. Freezing point of water. Number 1, it is also known as freezing point of water. ठीक है. Second one, 0 degree Celsius. अगर हम लोग केल्विन में मेजर करें, it is about कोई जल्दी रे दिमाग खराब कर रहे हैं. Kelvin temperature. 0 degree means 273 degree Kelvin temperature. Right? At this temperature, water start to convert into ice. Water start to convert into ice. Water start to convert into ice. Water ice में convert हो जाएगा. अब बात आती है बच्चों absolute zero. Absolute zero. Absolute zero is the temperature of 0 Kelvin. Absolute zero is also known as 0 Kelvin. You can take a screenshot of this one. 0 Kelvin temperature. एक बात. Number 2, no activities are allowed. No activities are allowed at this temperature. At this temperature, it means all the activities are stopped. कोई भी पार्टिकल यहाँ पर वाइब्रेट नहीं करेगा. No vibration of particles. No vibration of particles. चाहे वो गैस हो, चाहे सॉलिड्स हो, चाहे लिक्विड्स हो, सब अपना काम बंद कर देंगे इस टेम्परेचर पर. इस टेम्परेचर के बाद में कोई एक्टिविटी नहीं होगी. दिस इज नोन इज एब्सोल्यूट जीरो. गॉट इट? एब्सोल्यूट जीरो मीन्स द टेम्परेचर एट विच हम कहेंगे हमारी बॉडी एक्टिविटीज, हमारे एंजाइम्स -10 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस ब्लॉक हो जाएंगे. लेकिन यहाँ तो कितना है? 0 डिग्री केल्विन. 0 डिग्री केल्विन ऑल्सो नोन एज -273 Celsius degree Celsius. So all activities will be stopped at this temperature. Now Kelvin and Celsius scale.
केल्विन और सेल्सियस स्केल यू नो वेल, 0 डिग्री सेल्सियस इन यहां पर, चलो इसका आंसर मैं भेज दूंगा, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। टेकन? Yes, sir. चलो, Yes, sir. 0 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर। इन केस ऑफ सेल्सियस 0 degree is the freezing point and 100 degree is the Boiling point. point of water. Boiling point of water 100 degree, freezing point 0 degree. In case of the Kelvin temperature, freezing point is about, freezing point of water about 273 Kelvin, while the boiling point about 373 Kelvin. Got it? ये हो गया डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, 0 डिग्री इक्वल टू 273, 100 डिग्री इक्वल टू 373। The 0 degree, 0 Kelvin temperature, all the activities are stopped, so it is known as absolute zero, while 0 degree Celsius is the only freezing point of water. ये 2 पॉइंट यहां पर आ जाएंगे। Now thermal expansion and contraction। बच्चों, when we heat any object, it expand. It is thermal expansion. When we cool any object, it contract. This is known as thermal contraction. Contraction, thermal contraction. Heating, thermal expansion, because it expand. Got it? अब बात आती है बच्चों लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ऐसे ही समझ लेते हैं कैसे कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पोर्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड laboratory thermometer. Look here, clinical thermometer number 1, you will write over here clinical thermometer and laboratory thermometer. It is used in laboratories, it is used by doctors in clinics. Number 1 point. Number 2 point, temperature range. Temperature range 37 degree Celsius to 42 degree Celsius. Here temperature range minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. 110 degree Celsius. Next one, king is present. Here king is absent. King is absent. ठीक है बच्चों, ये हमारे पास में डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन राइट द डिफरेंसेस। क्लिनिकल थर्मोमीटर, टेम्परेचर रेंज, किंग। हो गया सर, लेकिन क्लिनिकल के 3rd पॉइंट किंग प्रेजेंट है, इसमें लेबोरेटरी